Today's our topic is outward areas. There are five steps. First step is that you have to tell your name. As my name is dash. Second step is that you have to tell your father's name. As my father's name is dash. Third step is that you have to tell your caste, surname or family name. As my caste is dash. Fourth step is that you have to tell your qualification if you are studying. Otherwise, you have to tell your profession if you are working. As I have passed metric, or I study in class dash. How to tell the profession? I am a teacher or a student. Last step is that you have to tell your residency. There are two types of residency. One is present address. As where you live. I live in dash. Second one is permanent address. Where are you coming from? Dash. So these are the five steps to do introduction. First, you have to tell your name. As my name is Samo. Second step is that you have to tell your father's name. As my father's name is Hadi Hussain. Third step is that you have to tell your caste, surname or family name. As my caste is Samo. Fourth step is that you have to tell your qualification if you are studying. Otherwise, you have to tell your profession. As I have been or I have passed in metric, graduations, masters, MPhil, PhD, etc. Profession: I'm a teacher, I'm a doctor, I'm an engineer, etc. In the last, you have to tell your residency. I live in Hyderabad. It is my current address. I live in Hyderabad. In the last, permanent address. I come from district Dada. So these are the five steps to do your introduction. पहले स्टेप में आपने अपना नाम बताना है, सेकंड स्टेप में आपने अपना फादर्स नाम बताना है, थर्ड स्टेप में अपनी जात बतानी है, फोर्थ स्टेप में दो स्टेप्स हैं क्वालिफिकेशन या प्रोफेशन, क्योंकि हर कोई बंदा या तो पढ़ता है या तो कोई ना कोई काम करता है. सो क्वालिफिकेशन के हवाले से हमने लिख दिया आई हैव डन और आई हैव पास मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और मास्टर्स. और प्रोफेशन में बता दिया कि आप कौन सा काम करते हैं. जैसे आई एम टीचर, सो मैं टीचर लिख रहा हूँ. अगर कोई स्टूडेंट डॉक्टर है या कोई टीचर इंजीनियर है, नर्स है, सो वो एज अ प्रोफेशन लिख सकता है. लास्ट स्टेप में ही आप कहाँ रहते हैं. दो किस्म की राय होती है, एक जहाँ आप रहते हैं, जैसे आई लिव इन हैदराबाद, लेकिन परमानेंट एड्रेस भी होती है कि आप कहाँ से आए हुए हो. आई कम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट दादर. सो ये 5 स्टेप्स थे. जब भी आप इंट्रोडक्शन देना है यही फॉलो करना है. इसके अलावा हम 3 स्टेप्स को फर्स्ट स्टेप में भी तब्दील कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी. आई एम dash. For boys, son of dash. For girls, daughter of dash. By caste is dash.
तीन स्टेप्स को हमने एक स्टेप में तब्दील कर लिया। जैसे पहले में माय नेम इज अली, माय फादर नेम इज फातिमा हुसैन, माय कास्ट इज समो। ये तीन स्टेप्स थे। अब हमने क्या किया, तीन स्टेप्स को एक साथ मिला दिया। जैसे आई एम अली, फातिमा हुसैन, माय कास्ट इज समो, ये आपने एक ही साथ में पढ़ना है। जैसे आई एम अली, फातिमा हुसैन, माय कास्ट इज समो। Now, second steps. I have done. Uncle. Or I'm a teacher. Third step. I live in Hyderabad. But I come from district Delhi. It is a short introduction activity. As I am me, son of Father Muslim, my caste is Samo. I have an uncle, I'm a teacher. I live in Hyderabad, but I'm basically from district Delhi. So ये था हमारा टॉपिक, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में कैसे बताया जाए। अब ये था हमारा इंट्रोडक्शन एक्टिविटी 1, जैसे माय सेल्फ पे कंसिस्ट था। अब इंट्रोडक्शन एक्टिविटी 2 होगी। जैसे ये इंट्रोडक्शन एक्टिविटी था, हमें अपने बारे में बताना था। अब जो सेकंड एक्टिविटी होगी वो किसी और के बारे में इंट्रोडक्शन कैसे किया जाएगा। लेट्स सी। इसके लिए हम यूज करेंगे his or her. His used for boy, her used for girl. He used for boy, she used for girl. तो ये बेसिक 4 स्टेप्स में किसी और के बारे में जनरली बताने के लिए। जैसे अगर मैं बॉय के लिए बता रहा हूं तो यूज करूंगा हिज नेम इज अली, हिज नेम इज अली। अगर लड़की के लिए बताऊंगा तो क्या, हर नेम इज लेट्स सपोज आलिया, ही इज माय स्टूडेंट। सेकंड स्टेप में क्या बताना है, रिलेशनशिप बताना है कि आपका उसके साथ क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है। ही इज माय student or she is my student. Third step, he is a teacher or he is a student or she is a teacher or she is a student. He lives in Hyderabad or she lives in Hyderabad. ये 4 steps थे किसी और के बारे में बताने के लिए। Let's suppose you start. Yes.